बस इश्क मोहब्बत प्यार। बस्ती है मस्तानों की दिल्ली, दिल्ली गली है दीवानों की दिल्ली, बस्ती है मस्तानों की दिल्ली। Delhi, Dil Walon ki Delhi, is a splendid city. Every day, people come in bustling here for their livelihood, for enjoyment, for salvation. Here the day starts at a high note, and so does it end. Old Delhi is the heart and soul of Delhi, always bustling with trade, always brimming with business. And in this heart of New Delhi exists a place where we live. I, with my sisters, with my children, with my pimps. People shy away from this road. People condemn us. But at the end of the day, people visit us too. People can have good views about us, bad views about us, but people cannot ignore us. People do not consider us as a part of the so-called mainstream society, but we exist. How strange is that? Society creates us, but alas, condemns us too. A huge problem because according to some data, almost 12.3 million people worldwide are used for trafficking. So it's a huge problem. It is a real problem, and a lot of vulnerable people are lured into this so-called business, and they lead a very horrific life subsequently. In those lanes where night never seems to fall, do exist the hearts that beat, people that breathe, and lives that live. ये गलती करता है तो 10 को भुगतना पड़ता है। इसकी वजह से हम लोग को परेशानी नहीं चाहिए, ठीक है। हम जैसे भी हैं 20 साल हो गए इस रोड पे आके, कोई ऐसी परेशानी नहीं है हमारे को, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, किसी चीज़ की हमारे को तंग नहीं है, हमारे को किसी ने कोई हमारे को ज़बरदस्ती नहीं करा। माँ बाप नहीं हो तो हम मतलब क्या हमें क्या है, 2 रोटी खानी है वो तो कहीं भी बैठ के खा सकते हैं। जो हम कर रहे हैं वो अपने बच्चों के लिए ही तो कर रहे हैं। आप अपने बच्चों के लिए नहीं चाहते होंगे कि कोई आम बात नहीं होती है, कोई लड़की या घर की, मेरी फैमिली की बात करती हूँ। मेरे घर में कोई आदमी नहीं है, बाप नहीं है, भाई नहीं है, हमारे 4 बहनें हैं। 4 बहनों को पढ़ा लिखा के शादी करना कोई अच्छी बात हो, आम बात नहीं होती है। इसी रोड पे कमा के खा के उनको करा है। आज हमारे पेट पे लात मारेंगे तो इस सरकारी को क्या मिलेगा, ये पुलिस वाले को क्या मिलेगा? जो भी हम अपने काम में अरे गलती ये करता है, 10 जनों को भुगतना क्या जरूरत है? इसी जगह पे हम कमा खा रहे हैं, इसी जगह हमने बाल बच्चों को पाल रहे हैं। तो कल के दिन हमारे को तकलीफ आएगी तो इन लोग साथ देंगे, मीडिया वाले हो, पुलिस वाले हो, जो भी कर रहे हैं, जो ये साथ देंगे क्यों नहीं देंगे? नहीं, मैं कह रही हूँ ना, पूछ रही हूँ, मैं कह रही हूँ कौन साथ देता हूँ? कोई नहीं साथ देता है, सब अपना अपना मतलब बाहर ना निकले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 5 साल की लड़की को नहीं छोड़ रहे आजकल। 6 साल की लड़की अगर हम ही नहीं होता, सामान लगता है तो हमारे रहने के बाद छोटी बच्ची बाहर छोटे छोटे बच्चे घर से नहीं निकल सकते। हम लोग रहने के बावजूद छोटे-छोटे बच्चों को करने वाला यहाँ पे आ जाता है, पीने वाला, खाने वाला, सबको हम निमटा के भेजते हैं प्यार मोहब्बत से। क्यों? ये हमारा नाम तो नाम धब्बा पड़ गया, हमारा नाम धब्बा पड़ गया। उसका मतलब ये थोड़ा ना कि हमारे को यहाँ से हटाना चाहोगे, ये गलत बात है। तो क्या आप कुछ बता, अगर हमारे को यहाँ से हटाना चाहते तो हमारे लिए कुछ करो। आप क्या चाहते हैं कि सरकार आपके लिए क्या मदद, क्या जैसा मदद दिखाओ हम वही मदद करेंगे। फिर जैसा आप लोग को हम ऐसा करेंगे, गवर्नमेंट जो चाहते हम वही करेंगे। है कोई बुराई नहीं है, जब नहीं कुछ दे रहा है तो सरकार तो क्या करेंगे, क्या बुराई करें। लेकिन कुछ इतनी तो महंगाई कर दिया, जो कोई रोटी खाने वाले गरीब लोग कहाँ से जिएंगे। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? परिवार के बारे में बताइए। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ जाते हैं। आपको कुछ परेशानी आती है उनको आम इंसानों की तरह बड़ा करने में? क्यों नहीं आते परेशानी, जब कमाए नहीं होंगे तो परेशानी तो होती है हर चीजों के लिए, क्यों नहीं होती? आपको लगता है जब वो बच्चे बड़े होंगे तो इस बात का उन पे फर्क पड़ेगा कि? क्यों नहीं पड़ेंगे, बच्चे को फर्क नहीं पड़ेंगे। आप देखो जब तक ये है हम कमा रहे तो बच्चे को खिला रहे, अगर ये रोड टूट गया तो हम कहाँ जाएंगे? सही बात। किस तरह से हम अपने बच्चों की परवरिश करेंगे?
तो कोई कस्टमर अगर रेगुलर आ रहा है तो इंसान तो बहुत दूर है, जानवर भी अगर पास हो तो उससे भी मन लग जाता है, ठीक है ना। तो फिर आपस में एक दूसरे के साथ देखना, दूसरे कस्टमर के साथ देखना, ये देखना वो देखना, तो बर्दाश्त नहीं होता तो झगड़ा हो ही जाता है आपस में। So, but it can happen. They are entering by will, but suddenly they are not like that much happy. That is also a problem because sometimes lack of information, lack of awareness of what are the consequences of entering into this profession, because there is unfortunately no organized business in our country particularly. So most of them, if they enter this profession by will, they are generally exploited emotionally, physically and sexually. So what can you provide as the after effects of this particular thing? If I get a person who is rescued out of that organization or that particular profession, what do you think would be the after effects in terms of the mental status of that person? I think if one enters into this ghastly profession, there are lots of psychological consequences. A person goes into low self-esteem, shame, guilt, grief. They may have anxiety, depression, post-traumatic stress disorder. So they may have physical illnesses like HIV, they may become HIV positive, or they may have sexually transmitted diseases. Physically they may be beaten up. So physical exploitation is also there. They may be malnourished, they are not given adequate food and adequate shelter. So all those things are there. So I think the physical, psychological consequences are sinister and they need to be addressed. It is possible to help a person come out of it, but then you have to provide them with a very comprehensive package of care. See, one of the reasons why people are not able to leave this profession if they want, even if they want to, is that they fear. They fear that the perpetrator might threaten their families or threaten them that if you come out of it, we will destroy you, we will destroy your family. There's a lot of blackmailing that goes on in this profession. So once a person who is very traumatized because of this experience, he comes out of it, or she comes out of it, then it's very important that we are able to provide them a comprehensive package of care. Right from, they may have children also. They may have, so they also need to be taken care of. They are, see, a person who is into this profession does not mean that they are evil in any case. They are as good as human beings as we all are. They also have emotions. The only difference is that because of their bad experiences, there may be a disintegration in their personality. They may become very callous to emotional needs. They may become very harsh. Their attitude might appear very harsh. But actually they are very vulnerable, very soft people from inside. So we have to break that shell and help them come out of it. कि जो हम अगर आधी रोटी खाएंगे ना तो इज्जत की खाएं। Crime. Prostitution is a crime in India. It is not legalized. I think India is, because India is a very big society, and that's what I feel. You will find a lot of educated people, you will find totally uneducated, illiterate people. It's a big society. But still, yes, we are very far off, because if majority of us live in rural India, they are not educated, they do not understand the psychological sophistication associated with a lot of social issues. As a result of which, they are not able to understand that there is a need to accept people who accidentally fall prey to such acts. Like, blanket statements are good, but eventually in every culture, if you notice, there are certain professions which are not accepted. Again, that is one of the things. But the question isn't that should it happen or should it not happen. Obviously, it should happen. The question is, how can we do it? As somebody who's living in a certain time, in a certain zone, only possible. How can we liberalize society more and more to the point that we can accept peripheral things into our central zone and give them the respect they demand? Part of society, and not from from this century. It is from the ancient time also. So I'm
strongly many of my colleagues also, like fellow students, they also believe the same, like prostitution should be legalized, and the legal license should be given to the prostitutes, and also they should not, even the young generation, they should not look towards the women who are involved in these activities that they are bad, or the character should not be related to that. It's a different thing. The character is a different thing. A general normal woman who is not in the area of prostitution, she can also be of a bad character, and a prostitute can be of a good character.